രാജയോഗിനി ദാദി ജാനകിജി ഒരു അസാധാരണ ജീവിതത്തിനുടമ. മാനവ ഉദ്ധാരണത്തിനായി അക്ഷീണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ജീവിതം. ആത്മീയ ഗവേഷണത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിതമായ പ്രശാന്ത ജീവിതം. ആഴമേറിയ അവബോധത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ജീവനുള്ള ഉദാഹരണം. സ്വജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണമായും സമാവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു മഹായോഗി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലും ജീവിത രീതികളിലും ചിന്താരീതികളിലും വിവിധ പ്രായത്തിലും പദവിയിലുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ സ്നേഹമെന്ന ആഗോള ഭാഷ കൊണ്ട് തൻ്റേതാക്കി മാറ്റിയ, അവരെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ദാദിജി. തീക്ഷ്ണ ബുദ്ധിയും വിശാല ഹൃദയവും അക്ഷീണ സേവനവും സന്തുലനം ചെയ്യുന്ന ദാദിജിയുടെ മഹത് വ്യക്തിത്വം എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയുടെ തണലേകുന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിന് സമമായിരുന്നു. 1937 തൻ്റെ 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദാദി ജാനകിജി ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാബാബയുമായി ആദ്യമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അന്ന് 300ഓളം കുട്ടികളുള്ള, അതിലും കൂടുതൽ വനിതകളുള്ള ആ ഒരു ചെറു സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. She said to her father, it was time to study science at school, and she said to her father that science might change my mind about God and take me away from God, and I don't want that to happen. So let me have my further education by going on pilgrimage. And so her father shut up shop and took her on pilgrimage to the 4 corners of India. आपको याद है वो कौन सी घड़ी थी ये फोटो? And the question that she had for the sages that she would meet on her pilgrimages was, tell me your experience of God. Don't talk to me about God or what the scriptures say. Tell me your personal experience. And from the blank look in their eyes, she knew that it was something they were striving for, but they hadn't yet come to. It tells me that this has been the whole of her life. There hasn't been any other interest in her life except to know God and to know the self, and secondly to serve humanity. 100 വർഷത്തിലധികം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ 104ാമത്തെ വയസ്സുവരെ ആത്മീയ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ ഉത്സുകയായിരുന്ന ദാദിജിയുടെ ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരത സർക്കാർ ദാദിജിയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി. 2021 ഏപ്രിൽ 12 ആദരണീയ ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു അവர்களுടെയും മിനിസ്റ്റർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് IT, ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ജിയുടെയും മഹത് സാന്നിധ്യത്തിൽ ദാദിജിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങി. ഡോക്ടർ ശ്രീ കാർത്തികേയൻ ജി, ശ്രീ സെൽവമൂർത്തി, ബ്രഹ്മകുമാരി ആശാ ബഹൻജി, ബ്രഹ്മകുമാരി ശിവാനി ബഹൻജി, ബ്രഹ്മകുമാർ ബ്രിജുമോഹൻ ഭായിജി, ബ്രഹ്മകുമാർ മൃത്യുഞ്ജയ് ഭായിജി എന്നിവരും ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ദാദിജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഔപചാരിക പരിപാടിയിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. हर एक के दिल पर परमात्मा प्यार के स्टैंप ही लगा देती थी, और आज ऐसी दादी जी के कॉमेमोरेटिव स्टैंप के रिलीज पर हमारे साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी भी हैं. आज मैं सोच रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास लिखा करते हैं, इतिहास पढ़ा करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं. तो आज भारत सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने ये निर्णय लेकर कि ये पोस्टेज स्टैंप
आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी की निकाली जाए, भाई साहब आप 4 चीजों का सम्मान इकट्ठा कर रहे हैं। आप मातृ शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, प्रौढ़ आयु का सम्मान कर रहे हैं और आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान कर रहे हैं। Myself and Dr. Abdul Kalam used to go there. There was in the Global Health Hospital, they were doing this experiment on, without surgery also, you can change your life. Your style, meditation, yoga, and all that, the heart blocks can disappear. That is Dr. D. Narnish program in America, guided by Swami Satchidananda. He used to tell me what to do. These people never accept anything. So much of hospitality, they will not accept any money. He used to say that. That kind of hospitality and all these things are there. Another thing I would like to say is I was invited to participate in 90th birthday celebrations of Dadi Janaki Ji in London. I was her guest in London and Oxford also. Spent 3-4 days, watched this lady, amazing personality, always calm, peaceful, kind, simple, accessible, and so hospitable and kind. And morning 3 o'clock is up, Murali, her speeches every day. She has gone only, I think, up to state standard, formal education, but so much of wisdom and knowledge. Every day, something new. She was adored all over the world now. So, but today we are talking about empowering women all over the world now. At about 8 decades ago, Brahma Baba, the visionary founder of the Brahma Kumari movement, entrusted the entire responsibility of the now famous global movement in the hands of the chosen ladies. In the last 50 years, these great dadis together inspired thousands of spiritual-minded and dedicated sisters and brothers, spread the message of peace, harmony and spirituality far and wide, all over India and many other countries, extending global spiritual services. हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिपाही थे उनके आंदोलन के, और जब उनका 79 में देहावसान हुआ था तो प्रार्थना सभा में दादी जी भी आई थी, और हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, जेपी के साथ बहुत लंबा उस संघर्ष में रहे। महामहिम उपराष्ट्रपति जी हम लोग से काफी वरिष्ठ हैं, उस संघर्ष में उनका भी एक स्नेहिल सक्रियता रही। लेकिन उस समय दादी जी को पहली बार देखा था। उनकी आभा, उनकी सोच, उनकी प्रार्थना में जो तत्व था, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया था। और आज मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि एक बार आपके संगठन ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था, माननीय वेंकैया जी, जो पूरे ये गुड़गांव में आईटी प्रोफेशनल हैं, गुरुग्राम में, इसका उन्होंने 3 दिन का एक बहुत बढ़िया कैंप कराया था आध्यात्म की ओर, और कहा कि आप आईटी मंत्री हैं, आइए इनको संबोधित करिए। आईटी के प्रोफेशनल्स को तो मैंने दुनिया भर में संबोधित किया है, कैलिफोर्निया से लेके मुंबई से लेके लंदन तक, लेकिन ब्रह्म कुमारी के आध्यात्मिक परिवेश में आईटी प्रोफेशनल और देश का आईटी मंत्री उनको संबोधित करे, ये मेरे लिए भी अनुभव था। आपके इन सारे आयोजनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया आशा जी, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जेंडर जस्टिस की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन जेंडर जस्टिस के आंदोलन को जमीन पर उतारने का काम जो आपके संगठन ने किया है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है, और इसके लिए मैं आपका बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति जी से दादी जी के इस पोस्टल स्टैंप के जो पोस्टर है उसको अनवेल करने का निवेदन करते हैं। माननीय मंत्री जी दादी जी की स्टैंप का पहला एल्बम माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे।
दादी जी के चेहरे की रूहानियत, दिव्यता, पवित्रता, इसके वाइब्रेशंस सताश इस पूरे कमरे से सारे विश्व में पहुंच रही है। Whenever one meets Dadi Ji, one felt peace radiating from her ever smiling and peaceful face. She was an embodiment of calm and composure, who till very end always practiced what she preached. The Brahma Kumaris spread across the world are a living example of the values and principles epitomized by Dadi's life. What makes Brahma Kumari is also special that the organization is led by a woman, demonstrating the fact that spiritual attainments transcend gender-based distinction. Dadi Janaki Ji's philosophy of taking joy in serving others is the mantra for a happy and satisfying life. Serving others is the most satisfying thing in anybody's life. हमारा राष्ट्र के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू केवल उपराष्ट्रपति के नहीं है, भगवान आशीर्वाद देता है, किसी को निमित्त बनता है। मैं तो समझता हूँ श्री वेंकटेश्वर इधर उपस्थित होकर के हम सबको ब्लेसिंग दे रहा है, खुशी दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है। ऐसी महान हस्ती को मैं समस्त ईश्वरीय परिवार के, विश्व के परिवार के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।